Hello everyone, welcome to today's session. So I think most of you have already joined. Okay, so we'll start the class since most of you have already joined. It's 6:02, so without wasting much time, let's start. Give me a second so that I can share the screen. चलिए let's start. So this is what we have been going through since the last 2 to 3 classes, that is plant mineral nutrition, as part of which we have done lots of topics. कई सारे हमने topics किया था and आज हम लोग करने वाले हैं and hope you have already received the content PDF, सबको मिल गए होंगे. आप प्लीज उनको रिवाइज करते रहिए बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है, कई बार अगर सही से हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो रिवाइज नहीं किया तो भूलने के चांसेस है, क्योंकि लॉट ऑफ स्टैटिक कंटेंट, तो बहुत कुछ यू हैव टू रिटेन. ओके ओके ये सब हमने कर लिया है. ऑल दिस वी हैव डन. वर्मी कंपोस्टिंग ऑल्सो वी हैव डन. फर्टिलाइजर एप्लीकेशन ऑल्सो वी हैव डन. नाउ वी हैव टू सी द मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. मोबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स हमने ऑलरेडी देख लिया है, एंड वी हैव ऑल्सो सीन बेस्ड ऑन दैट डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस तरह से दिखते हैं प्लांट्स में, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स का, कुछ एलिमेंट्स का टिप न्यू लीव्स पे, कुछ ओल्डर लीव्स पे, हाउ बेस्ड ऑन ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट बॉडी. ठीक है. Okay, now when we talk about the mobility of the nutrients in soil as such, actually the forage area, if we look at the nutrient availability to the plant, अगर ज्यादा मोबाइल है द न्यूट्रिएंट अगर बहुत ज्यादा मोबाइल है तो ये पूरा भी उसका फोरेज एरिया होगा. ठीक है, मतलब कहीं से भी वो प्लांट के अंदर वो चला ही जाएगा आराम से. बट व्हेन इट कम्स टू द इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स, अगर वो इमोबाइल है, ओके, इन दैट केस फोरेज एरिया बहुत कम रहेगा, मतलब सिर्फ रूट हेयर्स के आसपास में ही वो होगा. अगर ओनली इट इज प्रेजेंट हियर समवेयर हियर, the plant would be able to absorb that. So based on the mobility also the forage area मतलब कहाँ से वो nutrients ले सकता है in this case. Okay, वो रहेगा. So regarding the absorption of the nutrients by plants, there are two processes. One, movement of the nutrient ions to the absorbing root surface. Okay, either वो root surface के पास आएंगे, or two, that is roots reaching the area where nutrients are available. Okay, for immobile nutrients, the roots have to reach the area of nutrient availability and forage volume is limited to the root surface area. वो ये है. Okay, second method. For highly mobile nutrients, the entire volume of the root zone would be the forage area. बिल्कुल कोई बिंदास वो आराम से आ सकता है, मतलब ले सकता है प्लांट. ठीक है. Now, mobile nutrients are those which are highly soluble and they are not absorbed on any clay complex, and generally these are the anions. Okay, anions बहुत rarely cations ऐसे होते हैं कि जो mobile nutrients and they are easily available in the what you will say in the soil solution. Okay, जो भी water होगा या liquid होगा in that solution. Very important here. Less mobile nutrients are also soluble, but they are absorbed on clay complex and so their mobility is reduced. See, when we talk about cations, cations क्या है? Clay complex और colloidal complex. See, इससे basically first thing हम लोग समझेंगे यहाँ पे, पेरेंट मटेरियल से पहले रेगोलिथ बनेगा. दिस इज द सॉइल फॉर्मेशन. रेगोलिथ से सैंड बनेगा, सैंड से सिल्ट, सिल्ट से क्ले. ओके, as this is all based on the weathering, again various types of weathering, based on the weathering the soil is formed. ओके, एंड हर जगह पे वेदरिंग होते होते लास्ट में ये क्ले कंपोनेंट बनेगा. दीज आर द बेसिक मिनरल्स in the soil. Okay, now when we talk about the basic minerals, ये ऐसा एक ऐसा mineral है clay, it is negatively charged. इसका negatively charged रहेगा. Now since it is negatively charged, it attracts the positive ions, that is cations.
Okay, so that's what here they are talking about. They're absorbed on the clay complex, and so their mobility is reduced. So since they are attached to that clay complex, the mobility of these nutrients is reduced and they stay where the clay minerals are there. So hence these are less mobile. Example, these all cations. Okay, and some are completely immobile. These ions are highly reactive and get fixed in the soil. बहुत ही मुश्किल से ये plants ले पाते हैं. Okay, and ये किस तरह से है and all that we'll be looking into. So kindly understand. एक और चीज है, there might be a change in the movement of these nutrient ions in the soil and in the plant. Okay, so accordingly they will be absorbed. So ये हो गया हमारा movement और या फिर nutrient movement in the soil. Now when we talk about, one second, yes, now एक तो हमारा मूवमेंट हमने देख लिया है. नेक्स्ट आता है रिलीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज. नाउ रिलीज रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम द unavailable forms to the forms that are readily available to the plants. Again, for this release of nutrients there are various mechanisms. सबसे पहले weathering जो अभी हमने देखा है. Okay, due to that weathering only the soil minerals are broken down in such a manner that it will form clay complexes. That is the last. इसके बाद इसका कोई degradation नहीं हो पाएगा, weathering नहीं हो पाएगा. In such cases, they are negatively charged and readily attract the cations and they'll become as the bearers of the nutrition. So here the same thing, it is a process by which soil minerals are broken down through exposure various means, and the weathering of, for example, potassium rich minerals can release potassium ions into the soil solution. Okay, whenever that weathering happens, in that case also if the parent material is rich in potassium ions, but since it is in complex or compound form, it will not be able to release it into the soil. So once it keeps weathering, okay, it will come down into such a case where the potassium ions, this is broken down into such small components that the potassium ions will be able to release into the soil solution. Okay, simple. Second आता है mineralization. This we have already done. It is a process by which organic matter is broken down to release the nutrients, right? Mineralization, the unavailable nitrogen organic form, so nitrogen forms will be converted into the available nitrogen forms. So here as you can see here, mineralization of organic matter can release nitrogen into the soil solution. So एक method है release का. Third आता है desorption. Now it is a process by which nutrients are released from the surface of the soil particles. So here simple जो clay complex के ऊपर जो nutrients attached है, that will be released, okay, into the soil solution, thereby the plant will absorb. वो ये आता है cation exchange में. What is that cation exchange? We will be looking into that in few minutes. Next आता है decomposition. Actually it is similar to mineralization, but mineralization focuses only on nitrogen, but decomposition, it focuses on all the nutrients. So it's a process by which organic matter is broken down by the microorganisms, and that can release nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. into the soil solution. So दोनों ही same है, decomposition and mineralization on the same lines, but the thing is mineralization focuses only on nitrogen forms and decomposition on all kinds of nutrients. So this is how the release of nutrients happen. Okay, now हमने फिक्सेशन देख ली. ओ सॉरी, फिक्सेशन अभी हमने देखा नहीं ना. ओके सॉरी, एक तो रिलीज हमने देख लिया है. रिलीज से पहले फिक्सेशन. सो हियर फिक्सेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर कन्वर्टेड इनटू दोज फॉर्म्स that are not readily available to the plants. ये not readily available to the plants जो है उनको available forms में convert करना ही release होगा, उससे पहले fixation होगा. ठीक है. Now this can occur through various mechanisms. The first is adsorption. Okay, adsorption में क्या है, जो भी soil particles है, on the soil particles these nutrients will be held tightly
थ्रू वेरियस फोर्सेस। जैसे क्ले कॉम्प्लेक्स में किस तरह से है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, देयर बाय दे आर एबल टू हेल्ड देम, राइट। सो उसी तरह से थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दिस कैन हैपन, लाइक योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी हो सकता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस से भी हो सकता है, ये भी एक तरह का फोर्स है। कंपाउंड्स में एक तरह का बॉन्डिंग आता है बेस्ड ऑन विच they hold on to the these ions. So here phosphorus often absorbed onto the surface of iron and aluminum oxides in the soil, making it less available to the plants. This we have studied no in the while we were doing nutrition, wherever iron या फिर aluminium ज़्यादा रहता है soil में, there the phosphorus absorption by the plants will become difficult. Why? Because they'll get absorbed onto the surface of the iron and aluminium oxides, thereby making it less available to the plants because उसी पे वो एब्जॉर्ब होके रहेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या है, वो कोई केमिकल कंपाउंड में नहीं रहता है, सिर्फ दे विल गेट अटैच लैच ऑन टू दैट आयन ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन। नाउ प्रेसिपिटेशन में क्या है, दे विल फॉर्म द इनसॉल्युबल कंपाउंड। जब आपने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रेसिपिटेट, कुछ फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन एंड ऑल दैट, द सेम थिंग विल हैपन हियर। सो हियर इन दिस केस बेस्ट एग्जांपल कैल्शियम एंड फॉस्फेट, दे कैन रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम फॉस्फेट। अगर दोनों मिल गए मतलब नाउ दैट वुड बिकम इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल नहीं है तो द प्लांट कांट टेक, because soluble hoga only then the root hairs will be able to absorb that nutrients from the soil. So always the nutrients have to be in soluble form, that is along with the solution, water solution, only then they'll be able to take up that, okay। Third process है complexation. So here it occurs when nutrients form complexes with organic matter or other substances, like a compound type का form हो जाता है। Actually precipitation भी उसी तरह का form है। So here copper can form complexes with organic matter, making it again less available to the plants. Okay, simple, Cu++ वो cation है, so it will be form complex with organic matter जो negatively charged है, and thereby it becomes unavailable to the plants. Occlusion occurs when nutrients are trapped within the structure of the soil mineral. So here potassium can be occluded within the structure of clay mineral, making it less available to the plants. Okay, so here again potassium अगर देखा जाएगा तो it is two forms of potassium है, एक तो exchangeable and एक non exchangeable. Exchangeable potassium क्या है, it is dissolved in water or held on to the surface of the clay particles through which cation exchange के through वो हो जाता है। बट समटाइम्स नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम आयन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, दे नो rather than getting attached जो negatively charged particles, they'll be trapped between the layers of the clay minerals. When we talk about clay minerals, आपने देखा होगा tetrahedral structure, octahedral structure, different structures में आते हैं, and that too silica and aluminium के sheets में layers type का होता है वो, that will be studying about when we do minerals part in soils. Okay, so उन clay minerals के बीच में वो trap होता है rather than latching itself to the negatively charged clay particle. Okay, ये हो गए हमारा fixation जो बिल्कुल they'll because of this fixation the nutrients will not be available to the plants. Now these unavailable nutrients are only made available to the plants by releasing of the nutrients again through various methods. ठीक है, यहाँ तक हो गया. Hope it is clear. Now after this comes the factors. One second. Yes, the factors one second, yes, the factors that affect the availability of the nutrients. So nutrient availability के लिए pH भी factor है एक, that what you will say affect करता है availability of nutrients को. pH एक affect करता है, temperature, moisture, the amount of organic matter or the clay content in that soil, all these are various factors that affect the availability of the nutrients in the soil. ठीक है. Now most of the plants they are slightly they prefer slightly acidic to neutral soil, that is 6 to 7, which is very much ideal. When we look at the pH scale also 0 to 14 रहता है, बीच में 7 which is completely neutral.
So 0 to 7 it is acidic in nature, and 7 to 14 it is salinity, saline or alkaline in nature. Okay. नेक्स्ट स्ट्रांगली एसिडिक इनको बोलते हैं जहां पे पीएच इज लेस देन 5.5. सो बेस्ड ऑन दिस एसिडिटी ऑल्सो द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी विल बी अफेक्टेड. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पूरा टेबल दे दिया यहाँ पे. नाइट्रोजन ऑप्टिमल पीएच रेंज फॉर इट्स अवेलेबिलिटी 6 to 8. सो लेस देन 6, ग्रेटर देन 8 जब भी होगा, देन द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वुड बी ए प्रॉब्लम. So it becomes less available in highly acidic or alkaline soils because of its inherent nature. Okay. नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस. देखिए फॉस्फोरस 6 to 7.5, मतलब 7.5 के ऊपर एंड 6 के नीचे इट विल बी डिफिकल्ट, इट वुड बी unavailable to the plant. So it becomes highly unavailable below 5.5 and above 8 due to fixation, because at that time they'll get fixed into some complexation जो हमने देखा है, या in some compound form they'll fix themselves, thereby making them unavailable to the plants. Likewise, potassium, calcium, magnesium, sulfur, iron, manganese, copper, zinc, boron, molybdenum, based on their inherent chemical structure, they have their own requirement of the pH so that they are available, no, or in the solution form in the water, in the that soil water, to make to be available for the plants. So ये very very important table है आपका, self explanatory है, simple. आप ये देख लीजिए, then देख लीजिए which is the optimal pH range for its availability and what happens if it goes beyond that. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज आप, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज आप देख लीजिए. नाउ व्हेन व्हाट हैपेंस इफ, अगर इफ यू वांट टू मेक द करेक्शंस, सो सॉइल एमिलियोरेशन करना पड़ेगा. सॉइल एमिलियोरेशन मेथड्स जब हम लोग करेंगे ना, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स like acidic soils, saline soils, alkaline soils, in that we have to make corrections. ओके अगर एसिडिक सॉइल्स है तो सॉइल्स एसिडिटी को कम करना है. अगर बेसिक सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स है तो उनकी सेलिनिटी और एल्कलिनिटी कम करना है, फॉर विच वील हैव सम मेथड्स टू बी अडॉप्टेड. कुछ एग्रीकल्चर मेथड्स डायरेक्टली कर सकते हैं, कल्चरल मेथड्स, या फिर कुछ केमिकल मेथड्स भी हम लोग कर सकते हैं. ओके, करेक्शन मेथड्स, दिस आर ऑल. सो ऑल दोज मेथड्स दे फॉल अंडर दिस सॉइल एमिलियोरेशन प्रोसेसेस. तो उस चैप्टर में जब हम लोग प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट सॉइल्स के डिफरेंट सॉइल एमिलियोरेशन मेथड्स क्या क्या है. कल्चरल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स, दैट इज कल्चरल या फिजिकल सेम ही है ऑलमोस्ट, या केमिकल मेथड्स, किस तरह से हम उस सॉइल्स को करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, टिल दैट टाइम इतना ही आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन. जैसे हमने देखा पीएच कितना इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. सी अगर हाई टेम्परेचर है तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द न्यूट्रिएंट्स. हियर इट इंक्रीजेस माइक्रोबियल एक्टिविटी, speeding up the organic matter decomposition and nutrient release. Okay, in tropical soils high temperature enhance nitrogen mineralization, making nitrogen more available to the plants. So high temperature जिस तरह से tropical areas में, वहाँ पे nitrogen availability सही होगा अगर already उसमें available है. Low temperatures, it reduces the microbial activity, slowing down the decomposition and nutrient release. So that's the reason colder climates में phosphorus and nitrogen, even though it is present, it remains less available due to reduced microbial breakdown. Extreme heat, it can cause excessive volatilization of nutrients like nitrogen and loss of soil moisture. Volatilization directly gaseous form में convert हो जाता है, they'll be highly volatile. Okay, and dry regions experience ammonia volatilization, reducing nitrogen availability. Because of the dry nature, no moisture, so they will escape from the soil in the form of gases. So ये हो गया temperature का effect. Next, moisture भी, it affects. Optimum moisture जब रहेगा तो obviously that will support the microbial activity, thereby facilitating the nutrient mineralization and their availability. वही drought conditions है तो again without moisture the microbial activity will also be reduced, and that also limits the decomposition, thereby reducing the nitrogen mineralization and all that, thereby
कोई भी न्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। वाटर लॉग्ड सॉइल्स में अगेन ऑक्सीजन नहीं रहेगा, प्रमोटिंग डीनाइट्रिफिकेशन, जहाँ पे भी दिस वाटर लॉग्ड कंडीशन में ऑक्सीजन कम रहता है, in that cases denitrification happens, thereby nitrogen is lost as gas due to this denitrification. So ये है moisture का effect on the availability of nutrients. वही nutrient availability can be affected by the amount and state of organic matter. Okay, high organic matter है तो ठीक है, no, increases microbial activity and thereby nutrient mineralization and all that. अगर state of organic matter, temperature वहाँ कम है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है एंड मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन स्लोज डाउन. जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन स्लोज डाउन व्हाट विल हैपन, सो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर विल बी मोर देन द डेड, कंप्लीटली डेड ह्यूमस, ह्यूमस से ज़्यादा ये रहेगा. व्हाट विल हैपन इन सच केस, एसिडिटी, acidic soils are formed, thereby again negative impact. So likewise स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे. सो हाई ऑर्गेनिक मैटर, लो ऑर्गेनिक मैटर, अगेन reduces the microbial activity, thereby less availability. like sandy soils, सैंडी सॉइल्स में ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम रहता है, बिकॉज ऑफ विच दे रिक्वायर मोर फर्टिलाइजर्स टू सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ. और even organic matter if we can add, that can enhance the nutrition status of the sandy soils. Decomposed organic matter, अगर humus है तो stable nutrient reservoir है, thereby it will provide nutrition to the plants. अगर वही डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे टेम्परेचर्स कम है, मॉइस्चर ज़्यादा है एंड ऑर्गेनिक मैटर बहुत स्लोली डिकम्पोज हो रहा है, सो इन दैट केस अगेन डिकम्पोजिंग वाला ज़्यादा रहता है रादर दैन द ह्यूमस, देयरबाय अगेन एसिडिक, राइट. सो इस तरह से बोथ कितना ऑर्गेनिक मैटर है एंड किस स्टेज में है, बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी विल बी अफेक्टेड. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन बाय द plants the nutrients. So plants absorb essential nutrients from the soil in two primary forms. एक तो cations जो है positively charged ions and दूसरा है anions जो है negatively charged anions. So here while cations taken up through cation exchange के through ही होता है जो cations, that is positively charged ions का absorption by the plants, whereas anions are absorbed through a different process called anion uptake और anion absorption. इसमें तरह तरह के processes है, ओके वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सी अनलाइक कैटयॉन्स विच बाइंड टू नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स या क्ले कॉम्प्लेक्स उस पे नेगेटिवली चार्जेस होते हैं, इसी नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम ये सब, एंड दे यहाँ से हाइट, मैं यहाँ पे आपको फोटो दिखा देती हूँ, दिस वुड बी वेरी इजी. सी दिस इज द पार्ट दैट वी हैव टेकन एनहांस्ड फोटोग्राफ. सी दिस व्हाट इज हैपनिंग इज दिस H+ आयॉन्स जब ब्रेक डाउन होता है वाटर का, H+ आयॉन्स रिलीज होते हैं. So those H+ ions are released by these root hairs into the soil solution. Now this H+ ions will replace the cations on the clay complex. As you can see, this is a clay complex or colloidal complex. This is also called, जिसका negatively charged है. इसमें कई सारे positive, as you can see here, cations सब इसके लिए इसको attached है. So this hydrogen ion will take place of potassium ion and this is released. Similarly, calcium, magnesium ये सब exchange होते रहते हैं and this process is called as cation exchange. So clay particle which is negatively charged binds the cations. The cations are exchanged for hydrogen ions obtained from the carbonic acid or from the plant itself. That is H+ ions either plant ही directly release करता है और जो रूट से जब रेस्पायर करते हैं दे टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर, उसका मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, thereby releasing carbonic acid plus H+ ions. ये carbonic acid further breaks down, okay, to form HCO3
माइनस आयॉन्स एंड H प्लस आयॉन्स. सो H प्लस आयॉन्स दो तरीके से आते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली. वन, ड्यू टू डायरेक्ट रिलीज ऑफ H प्लस आयॉन्स बाय द root hairs based on the biochemical reactions that happen, or through release of the carbon dioxide that combines with water to form carbonic acid and उसी से H plus ions release होते हैं. दोनों में से किसी भी reason की वजह से H plus ions release होंगे, that will help in this cation exchange. So mineral cations are released into the soil solution once यहाँ पे H plus ion आके K plus ion का जो place लेते ही K plus ion immediately will be released into the soil. वो अपना bond उसका टूट जाता है from the clay and it is released into the soil solution immediately along with the soil water. The ions are absorbed by the plant. बहुत सिंपल है ये. बस ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिए, 1, 2 and 3 कैटायन एक्सचेंज. ठीक है. सी, so cation exchange तो ये process है. Now the capacity to exchange cations between the soil particles and the soil solution, this is called as cation exchange capacity of the soil, and this is determined by the negative electric charge on the surface of the soil particles. This is called as CEC, cation exchange capacity of the soil. So different soils, they have different cation exchange capacity. So this charge attracts the cations, restricting them from leaching away, and this phenomenon is called as cation exchange. And the capacity of the soil to exchange the number of cations is called as cation exchange capacity of that soil. So cations are held by negatively charged particles of clay and humus, which are called as colloids. Colloids are nothing but thin flat plates, and they act as a storehouse of nutrients for plant roots. Very, very important. Colloids are those that act as a storehouse of nutrients for plant roots. The stronger the colloid's negative charge, the greater its capacity to hold and exchange the cations. Okay, the 5 most abundant exchangeable cations in the soil are calcium, magnesium, potassium, sodium and aluminium. इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. On the other hand, sodium and aluminum are not. But if they are in excess, sodium and aluminum अगर excess है तो कोलोइडल कॉम्प्लेक्स में यही सबसे ज़्यादा अटैच होंगे, thereby reducing the availability. बाकी क्या होगा अगर बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी, they get leached away. Okay, along with water they flow into they leach away. Okay, so thereby making these ions not available to the plants. Plants को available नहीं होगा. So wherever sodium ions and aluminum ions ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे बाकी सब लीच होके चले जाते हैं, thereby not making them available. And pH के बेसिस पे भी CEC चेंज होता है. as you can see here, न्यूट्रल से जैसे जैसे एसिडिटी की तरफ आ रही है, देखिए pH 7, गुड अमाउंट ऑफ the particles, the cations are attached to the soil components. जैसे जैसे acidity की तरफ जा रहा है, you can see the number of ions they have reduced. Okay, so the quantity of cations that a clay mineral can hold on its negatively charged surface is commonly expressed. Okay, ये milli equivalents per 100 grams जो इसका unit है. Okay, so soil pH changes the CEC because the soil has exchange sites. It becomes active as the pH increases, and it becomes passive or inactive as the pH decreases. So soil CEC could be expected to increase up to 50% if the pH was changed from 4 to 6.5, and nearly double if the pH is increased from 4 to 8. Again 8 के ऊपर जाएंगे तो salinity and alkalinity increases. Again that will have negative impact. Okay, so it would be 6.5, almost 6.5 to 8 तक ही है इसका जो pH अगर रहेगा, then the CEC of the soils would be of high nature. Okay, ये एक important है. And if you look at the humus, it has the highest CEC value because organic matter colloids have large quantities of negative charges, thereby attracting more cations and making them available to the plants. Clay soils, इनका great capacity है to attract and hold cations because of its chemical structures,
बट अगर लो सीईसी वैल्यूज है किसी क्लेई सॉइल्स में, इसका मतलब है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है. सो व्हाट इज टू बी डन? देयर ईदर फर्टिलाइजर्स हैव टू बी एडेड और ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली द सीईसी वैल्यू वुड गो हाई. अगर फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली द फर्टिलाइजर इटसेल्फ विल बी मेड अवेलेबल टू द प्लांट्स इन देयर अवेलेबल फॉर्म. Next, sandy soil. Sand has no capacity to exchange cations because it has no electrical charge and hence has very low CEC, very मतलब zero के बराबर. Okay, and but this can be improved. How that can be improved? Again by adding organic matter, not simple organic matter, but well decomposed organic matter. Okay, or in simple terms, humus. Okay, now ये हो गया हमारा अब तक कैटयन एक्सचेंज किस तरह से होगा एंड व्हाट आर द वेरियस components of soil which has good cation exchange capacity and everything हमने देख लिया है. Now anion exchange, एक्चुअली ये आपके लिए है नहीं, कहीं मैंने देखा नहीं एक्चुअली, बट स्टिल अगर हम लोग एक्सचेंज के बारे में देख रहे हैं कैटायंस का, एक बार एनियंस का भी देख लेते हैं. एज आई सेड अर्लियर आल्सो, एनियन एक्सचेंज सिंपल प्रोसेस से नहीं होता है एज कैटायंस, बट दे हैव वेरियस अदर प्रोसेस टू बी फॉलोड. सो द फर्स्ट ऑफ इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. Now, anions such as nitrates, phosphates, sulfates are absorbed actively against their concentration gradient. इसके लिए अगर हम against मतलब जैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या है, डिफ्यूजन में हाई सोल्यूट विल मूव टूवर्ड्स द लो कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज जहाँ पे भी हाई सोल्यूट है, जैसे यहाँ सोल्यूशन है, यहाँ पे सोल्यूट बहुत ज्यादा है, एंड इन दिस केस यहाँ पे इन दिस द सोल्यूशन द सोल्यूट इज वेरी लेस. सो या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो जाते हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन है. ओके, बट समटाइम्स अगेंस्ट दिस, यहाँ लो है फिर भी इसको यहाँ पे आना है, इन दैट केस सम एनर्जी हैज टू बी पुट. ओके, नाउ दैट एनर्जी दिस नो absorbed actively against their concentration gradient, in that cases they require some energy, कहीं से एनर्जी चाहिए. that energy in the form of ATP would be used, that is adenosine triphosphate. जो हमारे लिए एनर्जी है, what फाइनल फॉर्म क्या है, जो एनर्जी रिलीज होती है जब फूड डाइजेस्ट होके through respiration and all that, whatever the energy that is released, that is in the form of ATP, right? So the same ATP is used and this would facilitate, and this is used by anion transport proteins. वो specialized proteins होते हैं which are present in the root cell membrane and that will absorb by utilizing this, थोड़ा energy spend करके वो anions absorb करता है. ठीक है. So since soil has low anion retention capacity, anions move freely in the soil solution but are absorbed through specific anion channels and transporters using energy which is in the form of ATP. This is called as active transport mechanism. उसके लिए कुछ specialized protein होता है, anion transport proteins बोलते हैं उनको, which are present in the root cell membrane. Very, very important. That helps in utilizing that ATP and absorbing these anions. So यहाँ पे nitrate uptake is absorbed by the plant root using nitrate transporters. ये है proteins NRT1 and NRT2 families which are again present in the root cell membrane. Once inside the root cells, nitrate can be either directly used in protein synthesis or reduced to ammonium for amino acid production, or they can be stored in vacuoles for later use. Okay, in any of these can happen, but otherwise this is how the process takes place. ये important है process हमारे लिए. Second है co-transport with hydrogen ions. This is also called as hydrogen symport system. ठीक है. Some anions are absorbed through co-symport system where anions move into the plants along with H plus ions. ओके, H प्लस आयन्स जैसे मूवमेंट होता रहता है सेल, रूट सेल से आउटसाइड एंड इनसाइड, उसी टाइम पे दे लैच ऑन टू दिस H प्लस आयन्स एंड दे गेट एब्सॉर्ब्ड बाय द plants. This process helps overcome the electrochemical gradient and facilitates effective efficient uptake. तो यहाँ पे कुछ एनर्जी की भी जरूरत नहीं है,
कुछ ग्रेडियंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की यहाँ बाहर एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए या फिर अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, वो भी ग्रेडियंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दे कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है फॉस्फेट अपटेक। सो फॉस्फेट व्हाट इट डज, anion it gets latched on to H2, okay, that is H plus ion, and thereby it moves into the plant. So H plus pumps create an electrochemical gradient allowing phosphate to move inside the root cell against its own gradient. ओके उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है ओके उसके अगेंस्ट ही इट विल एंटर विद द हेल्प ऑफ H प्लस आयॉन्स। यहाँ सिम्पोर्टर आपको दिया है। व्हाट इज सिम्पोर्टर? इट इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन that moves multiple molecules across a cell membrane in the same direction as they are moving। यहाँ पे क्या है? H plus molecules, okay, as they are moving H plus, along with that H plus PO4 will get latched on to it and it would be moved across the, ये cell membrane है root cell का, इस membrane के इस तरफ वो लेके आता है from outside solution। ओके सिंपल को ट्रांसपोर्ट मतलब इट विल लैच ऑन टू दैट, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। थर्ड आता है हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन, दैट इज डिफ्यूजन एंड मास फ्लो थ्रू डिफ्यूजन। जहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में वो चला जाता है। सो बाहर सोल्यूशन में तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड एंड सल्फेट आयॉन्स। सो अगर अंदर रूट सेल में इनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो विथ डिफ्यूजन दे कैन एंटर सिंपली। So this process does not require energy and occurs when soil anion concentrations are high. Only this occur when the concentrations are very high. Okay. For example, sulfate uptake. Sulfate ions are absorbed via passive diffusion or active transport depending on the soil availability. Chlorine का भी वही है. When sulfate levels in the soil are high, it enters the roots by simple diffusion. When sulfate levels are low, plants use active sulfate transporters. In this case, H plus ions. अभी हमने देखा है. Phosphates, sulfates, all that. जहाँ पे भी जब levels low है but the plant requires that, then it does that. If the levels are high, then they'll go by simple diffusion. Okay, ये हो गया। So ये अभी तक हमने किया है। What we have done, एक simple recap कर लेते हैं। We have done plant mineral nutrition. In this we have seen many terms like soil fertility, soil productivity, we have seen CN ratio, we have seen immobilization, ammonification, aminization, nitrification, denitrification, nitrification, inhibitors, all that we have seen. After that we have seen the Adnan and Stout का theory of essentiality based on which there are 17 mineral nutrients, वो भी हमने देख लिया। and each and every nutrient का जो function है वो हमने देखा है। and along with that we have also seen the deficiency of nutrients, right? तो deficiency of nutrients देखने के बाद हम गए थे, what we have done, we have done the biofertilizers part। बायोफर्टिलाइजर्स में भी पीजीपीआर हमने देखा है। पीजीपीआर किस तरह से 3 classes में डिवाइड होता है। one of the classes is biofertilizers and we have done that biofertilizers, examples of the organisms, etc. After that we have seen the उसके बाद क्या देखा हमने? कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का देखा हमने, वर्मी कंपोस्टिंग का देखा। वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट हाउ वर्मी वॉश इज प्रिपेयर्ड, what is wormy protein, what is the major differences between composting and vermi composting. Okay, we have also seen the various types of composting which are important, different types, and uske differences kya hai, chief characteristic features kya hai, and all that also we have seen. And after that we have seen the movement of the nutrients in the soil, movement of the nutrients in the plant body. Okay, and we have seen how the nutrients are made or how they are made available to the plants through cation exchange and anion transfer, diffusion, and all that we have seen different methods, right? So ये है basically the crux of PMN that we have done, plant mineral nutrition। ठीक है, now we'll be doing some MCQs, कुछ MCQs मैंने create किया है, that we'll be discussing now। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आई एक्सपेक्ट यू टू सॉरी go through the question, okay, and answer। ये किस तरह से हाइड होता है? 1 सेकेंड।
I'm trying to hide this. हाँ चलो ठीक है. See, this is a question and please try to answer. Chat box में आप डाल सकते हो. No need to unmute yourself. Okay. Now, which of the following type of manure or fertilizers is also known as organic nitrogen fertilizer? Yes, दो तरह के हैं. यहाँ पे मैंने एक दिया है. Yes, I'll explain that also why. Yes, गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लीज ट्राई टू आंसर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस, उससे नो रिकॉल वैल्यू बढ़ जाता है कि अच्छा उस दिन यही क्वेश्चन आया था या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आया था एंड वी हैव डन समथिंग ऑन दैट, गलत किया या सही किया है. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सो नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं. नोबडी इज गोइंग टू जज यू हियर. ओके, सो प्लीज ट्राई टू आंसर. यस. ओके, anyone else? Again, my earnest request is try to participate and try to answer these questions. Yes, here in this case, concentrated, yes, it is concentrated organic manures that are considered as the organic nitrogen fertilizer. Okay, answer is A. Okay, here because the amount of nitrogen, they have higher nutrient in this content than bulky organic manure, hence they're also known as organic nitrogen fertilizer. Yes, यूरिया को भी हम लोग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, बट वहां ऑप्शंस में वो नहीं है. Next comes is PGPR, refers to the group of bacteria that colonize the roots or rhizosphere soil and are beneficial to the crops. Now you have to tell me what does G stand for in PGPR? Yes. Yes, इसके सब correct है. So yes, here it is A, correct answer, that is plant growth promoting rhizobacteria PGPR. इसमें bioprotectants, biofertilizers and biostimulants तीन तरह के आते हैं. Okay, now the third question. Identify the kind of earthworms that are preferably used in vermicomposting. Yes, this is one kind of question. I'll give you another question also. Yes. Yes, here it is, not C, D, all of the above. But yes, when we talk about the African earthworm, ये हम लोग यहाँ D कर सकते हैं इसको. Okay, all of the above. But if they say which of the following kind of earthworm is the most beneficial in vermicompost production, you can give the answer Ugulus eugeneal, that is African earthworm. Why? Can anyone tell me why? Why this is most beneficial when it comes to vermicomposting? दो रीजन है. एक भी देंगे तो भी चलेगा. जस्ट टाइप द आंसर. यू कैन गिव मी इन द चैट बॉक्स. नो नीड टू अनम्यूट. yes, higher reproduction उनका, and it will convert the वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो टाइम लेता है ये कम लेता है इसका. ठीक है. Now, with reference to the Justus von Liebig's law of minimum that states that yield is proportional to the amount of the most limiting nutrient, whichever nutrient it may be, how many essential nutrients are there? मतलब ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पूरा दिया है. लॉ ऑफ मिनिमम या लॉ ऑफ थियरी ऑफ एसेंशियलिटी, दोनों में एक ही है आंसर. बाय एर्नन एंड स्टाउट. दोनों में the number of essential nutrients would be same. Yes. Yes, when we talk about the number of essential nutrients, there are 17 essential nutrients.
Yes. Now, which of the following is a non-mineral essential element required by the plants? Yes. Yes, it is B. Carbon is a basic molecular component. Okay. So carbon, hydrogen and oxygen ये तीनों भी non-mineral essential elements are required by the plants. Okay. So it is carbon. Yes, very good. Most of you all are correct. Urea comes under which of the following types of nitrogenous fertilizers? हमने देखा है nitrogenous fertilizers there are 4 types, right? So यूरिया किस में आता है? And इसमें different types के questions ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि they'll give you the fertilizer, okay, and they'll ask it nitrogenous fertilizers or the potassic fertilizers or the phosphatic fertilizers or any other fertilizer. मैंने सबका list आपको दे दिया है, please एक बार देख लीजिए. In this case, when we talk about urea, yes, यूरिया अमाइड फर्टिलाइजर्स में आता है बिकॉज ऑफ इट्स NH2. ओके, NH2 अमाइड फॉर्म है NH2 में. Yes, now Khaira disease in rice is due to deficiency of which of the following nutrients? कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से खायरा डिजीज होता है राइस में, जिसमें एक रस्टी, जनरली ये यंग सीडलिंग्स में होता है. ओके, एक रस्ट जैसा छोटे छोटे से एक ब्राउनिश पैचेस टाइप के. यस, यस, खायरा डिजीज ये जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से आता है. ओके. In cabbage, which element's deficiency causes the following symptoms like reddening and purpling of both upper and lower leaf surfaces, the cupped leaves turn back on themselves, and presenting flattened to concave surface on the upper side? Now, which is that element deficiency that we are talking about here? Yes. Here we are talking about, it's not calcium deficiency, it's sulfur deficiency. Sorry, here मैंने ये change करना भूल गई. 1 second. It is sulfur deficiency. Okay. Sulfur deficiency में ये होता है. No, cabbage reddening and purpling. Very carefully you have to see this. Okay. Okay, next question. 1 second. Okay. Name the fertilizers that supply 2 or more primary nutrients. ये थोड़े से इजी लग रहे हैं ना क्वेश्चंस में. हाई लेवल थोड़ा सा हाई कर दो नेक्स्ट वाले इसमें. आगे है अप्लाइड क्वेश्चंस भी है. आई हैव टेकन फ्यू. ओके, थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे नेक्स्ट इसमें. ओके, यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? It is complex fertilizers. They supply 2 or more primary nutrients. Compound form में रहेंगे. We have discussed this, right? Yes. How much percentage of nitrogen is present in ammonium nitrate? As I've said, percentage of nutrients पक्का पूछते हैं. एंड जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस किया, कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं. उसी तरह से क्वेश्चंस मैंने पिक किया है सो दैट वो क्वेश्चंस करना भी हो जाएगा एक बार के लिए हमारा, एंड देन ऑन द अदर हैंड प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमारे लिए. सो इन दिस केस it is 24.5%. 1 second, and as you can see here, this is a chemical formula. Okay, 1 second, बहुत स्लो है मेरा.
Okay. Among the given options, the citrate soluble phosphatic fertilizer is, phosphatic fertilizers हमारे 3 तरह के हैं, water soluble, citrate soluble and insoluble, right? So इसमें citrate soluble वाला fertilizer है हमारा dicalcium phosphate, okay, which contains 33 to 40% phosphorus in the form of P2O5. Okay. नेक्स्ट आता है हमारा, नेम द ऑयल केक दैट कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। एंड इस तरह के क्वेश्चंस में प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, कई बार रिलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन द ऑप्शंस दैट आर गिवन यू हैव टू पिक द राइट आंसर। यस, नेम द ऑयल सीड केक, ये कल हमने डिस्कस किया था। ओके, इट इज अ ग्राउंडनट ऑयल केक, इन दिस केस ग्राउंडनट दिया है, and linseed 5.5, cotton it is 6.5, sesame it is 6.2, 6.2। सो इसमें सबसे हाईएस्ट है ग्राउंडनट का। अगर ग्राउंडनट नहीं दिया है यहाँ पे एंड ये 4 दिए हैं, कॉटन, सेसेम, लिंसीड एंड इसमें, देन द करेक्ट आंसर वुड बी कॉटन ऑयल केक। सो बेस्ड रिलेटिवली यू हैव टू पिक द राइट आंसर। कई बार ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, विच इज द फास्टेस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। मैंने यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया है, कल हमने डिस्कस किया था सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग ये प्लांट करता है करके। यस्टरडे वी हैव डिस्कस दिस। क्या हो गया, नोबडी इज आंसरिंग? कोई नहीं, इट्स नॉट यू नो, यहाँ पे नोबडी इज गोइंग टू जज यू। ट्राई कीजिए, गलत होगा मैं आंसर दूंगी, करेक्ट कीजिए अपने आप को, दैट विल हेल्प यू इन योर रिकॉल, बहुत हेल्प होगा। Yes, it is Sesbania that fixes 100 to 285 kg nitrogen per hectare in 45 to 55 days, जो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा है इसका। ठीक है, ये हो गया एक हमारा। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो। यस, ब्लॉसम एंड रॉट। सी, जब भी ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती है बर्ड्स पे जो आते हैं, दैट वुड बी योर हाईली इमोबाइल वंस, एंड इन दिस केस ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, यस। Now, which of dash fertilizer application is the process in which the fertilizers at sowing time are to be uniformly distributed the fertilizer over the entire field and to mix it with soil? Yes, sowing time पे ये करते हैं। So, what is that fertilizer application called? Yes, ये basal application है। ठीक है, टॉप ड्रेसिंग जब वो होने के बाद, मतलब जर्मिनेशन होने के बाद जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट वुड बी top dressing, and both are in broadcasting. Yes, one of these following terms is a term used to describe the capacity of the soil to supply nutrient in available form to the crop. Yes. Yes, we are talking about the soil fertility here. Okay. So soil fertility का ability of the soil to supply essential nutrients, वही soil productivity, ability of the soil to produce a particular crop or a sequence of crops. That's why we say all the productive soils are fertile, but all fertile soils may not be productive, क्योंकि unavailable form में है तो वो कुछ नहीं कर सकते, right? So hence that difference. Now in the context of soil nutrients, which of the following best describes the process of immobilization? Yes, in the context of soil nutrients, which of the following best describes the process of immobilization? एक बार ऑप्शन सही से पढ़ लीजिए।
Yes. We are talking about immobilization. There are two terms, mineralization and immobilization. Okay. Mineralization is the one, the release of nutrients from organic matter into inorganic forms for plant uptake. Okay. But when we talk about immobilization, completely ulta, conversion of inorganic nutrients to organic forms, making them temporarily unavailable to the plants. Okay. So here B is the correct answer. Now, what is the significance of maintaining an ideal CN ratio? मैंने ये भी बता दिया यहाँ पे कि ideal CN ratio 30:1 है. Now, you have to tell me why it has to be 30:1. Why not more? Why not less? There should be some reason, right? Yes. सी होगा. चैट बॉक्स में टाइप कीजिए. Yes, it is C, because it balances the microbial activity, allowing efficient decomposition of organic matter without depleting soil nitrogen. Okay, so here C is the correct answer. Yes, the microbial decomposition of organic nitrogen compounds such as amino acids, urea and proteins into ammonia and ammonium ions is known as. सॉरी, मैंने यहाँ 5th ऑप्शन नहीं दिया है. यहाँ पे नन ऑफ द ले सकते हैं. Yes, it is ammonification. Simple ammonia form हो रहा है, ammonification. Okay. Now, which element plays a crucial role in the formation of amino acids, nucleic acids and chlorophyll? तीनों में यूज हो रहा है ये एलिमेंट. अमीनो एसिड्स में भी इसका क्रूशियल रोल है, फॉर्मेशन में न्यूक्लिक एसिड्स में भी है, क्लोरोफिल में भी है. Yes, which is that element? That's the reason जब ये एलिमेंट कम होता है, डेफिशिएंट होता है, प्लांट पूरा इट विल टर्न येलोइश इन कलर, स्टंटेड ग्रोथ, येलोइश इन कलर, लीव्स एक्सेट्रा. यस, मैंने बहुत सारे हिंट्स दे दिया है. अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स में तो विदाउट दिस वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते. यस, इट इज नाइट्रोजन. ओके, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है. Necessary for formation of amino acids, important for nucleic acids, even they help in chlorophyll and also they help in synthesis of auxins. Which of the following is a primary function of phosphorus in plants? Phosphorus का major function क्या है plants में? जहाँ पे भी phosphorus आता है, मैंने clearly कल जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में, आई हैव सेड एक ही वर्ड, 2 वर्ड्स, वो 2 वर्ड्स याद रखेंगे तो काफी है. यस, व्हाट आर दोस 2 वर्ड्स? energy, ATP, energy currency, right? So here they help in energy storage and transfer through ATP, that is adenosine triphosphate. And ये सब कहाँ पे होता है? Which is that cell organelle जहाँ पे ये सब होता है? That also we have discussed. Mitochondria. Okay? Yes. Moving on to our next question. Sulfur plays a crucial role in which of the following processes in plants? अब सल्फर का कहाँ पे है?
सल्फर का हमने अच्छे से डिस्कस किया है, वेयर एंड व्हाई इट वुड बी इम्पोर्टेंट. Yes, anyone else? सल्फर दो जगह पे, ऑयल सीड्स एंड प्रोटीन. सो ऑयल सीड्स, फैट्स क्या है, एनर्जेटिक्स, राइट, एनर्जी देते हैं ना वो. एंड देन अमीनो एसिड सिंथेसिस. सो हियर इन दिस केस इट इज सी द करेक्ट आंसर. सल्फर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द plant cell energetics and amino acid synthesis. Now next question. In plants, one second. In plants, actually मेरा ये बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है व्यू. Are you able to see the question? Okay. ये जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सिम्टम्स है ना, वेयर दे अपीयर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स? Yes, this depends on the movement of the nutrients in the plants. Yes, try कीजिए. Statement by statement देखेंगे. Nitrogen and phosphorus deficiencies first appear in new leaves. No, they appear in old leaves because they're highly mobile nutrients. Okay. Calcium and boron, the deficiency affect terminal buds because they cannot be translocated within the plant. This is true. Zinc being highly mobile, zinc highly mobile नहीं, zinc moderately mobile है. So इसीलिए middle leaves में इसके symptoms सबसे पहले आते हैं, deficiency symptoms. Sulfur and iron deficiencies appear in older leaves. Okay, as they are easily transported. No, they are immobile, hence they are less mobile. That's why their deficiencies occur in lower leaves. Okay, or new, sorry, not lower leaves, new leaves. Sorry, new leaves. Okay, so here B is the correct answer. वही एक statement है जो बिल्कुल true है. Yes, which of the following, actually ये कहाँ कैसे जाएगा ये? आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो आप आंसर कीजिए. आई एम नॉट एबल टू सी द क्वेश्चन इटसेल्फ. हाँ, गया. Which of the following factors primarily determines the cation exchange capacity of the soil? Yes, which is that helps us determine the cation exchange capacity of the soil? Yes, it is the amount of organic matter and clay in the soil. Why? Because these are the ones, they are negatively charged particles, thereby attracting the cations, and hence their amount in the soil matters a lot when it comes to the cation exchange capacity. So here A is the correct answer. Now, why are excess sodium and aluminium in soil considered harmful for plant growth? ये सारे अप्लाइड क्वेश्चंस ही है. आई थिंक ये लास्ट वाला होगा. आई डोंट हैव टू चेक. Why are excess sodium and aluminium in soil considered harmful for plant growth? Yes, because they compete with essential plant nutrients, leading to reduced soil fertility. They promote rapid microbial activity which depletes. No, ये नहीं है. They enhance nutrient availability by increasing cation exchange capacity. ये भी नहीं है. Okay.
दे इंक्रीज सॉइल वॉट नथिंग, इट इज सी करेक्ट आंसर, दे compete। इसीलिए वो जहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे आयोन्स होना चाहिए, कैटायंस, दे टेक देयर प्लेसेस ऑन द कोलोइडल कॉम्प्लेक्सेस, देयर बाय मेकिंग, बाकी सब लीच हो जाएंगे, दे विल बी रिमूव्ड अलोंग विथ वाटर, सो देयर बाय वो डिक्रीज होंगे। ओके, सो हियर टुडे वी हैव कंप्लीटेड द प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, यस। सो आपको कंटेंट कैसा लगा? एंड क्वेश्चंस का तो थोड़ा सा लेवल में बढ़ाऊंगी, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो देखी थी ना, बहुत इजी थे, तो बेस्ड ऑन दैट ओनली फ्यू आई हैव मेड, वी डोंट नो हाउ द coming pattern would be, and I forgot to add descriptive questions here. एक मैं पीडीएफ जब मैं दूंगी उसमें मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दूंगी, सो दैट आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज मेंस में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे ना, आई हैव गॉन थ्रू द दिस वन पैटर्न, देखा था। प्रीलिम्स में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एंड मेंस में डिस्क्रिप्टिव है, सो डिस्क्रिप्टिव में के लिए I'll provide questions as well. Yes, now the forum is open for your queries, questions, comments, सजेशंस। अभी तो हमारा स्टार्टिंग है, तो आपके कुछ सजेशंस भी है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट देम इन दिस क्लासेस। एंड यस, थैंक्स अ लॉट अमन, थैंक्स अ लॉट के फॉर द अप्रिसिएशन। नो, ऐसे अप्रिसिएशन से मोटिवेशन बढ़ती है टीचर्स का। यस, ओके टू आई विल ट्राई। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा पिक्चर्स लगाऊँ जहाँ पे भी अवेलेबल है, बट कई बार ऐसा होता है कि अवेलेबिलिटी कम रहती है, इतने नहीं रहते हैं। आई विल ट्राई। यस अमन, मैं हैदराबाद से हूँ, तेलंगाना से। यस, कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज, कमेंट्स? डन। You thought I was from Assam? नहीं अमन, मैं असम से नहीं हूँ। मैं तो पूरा इंडिया घूमती रहती हूँ वैसे, मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से। तो अभी आई एम करेंटली आई एम बेस्ड इन लखनऊ। लखनऊ से मैं आपके क्लासेस ले रही हूँ। यस के, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग है, तो मैं भी क्लासेस को मैनेज नहीं कर पाई, दैट्स द रीज़न आई कुडंट इनकॉर्पोरेट क्वेश्चंस इन एवरी क्लास। अदरवाइज यस, विल हैव क्वेश्चंस इन एवरी क्लास, आपके हर क्लास में रहेंगे आगे से, नेक्स्ट टॉपिक से। आई विल मेक श्योर दैट विल हैव एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस इन एवरी क्लास, सो दैट उसी टाइम पे हमारा वो क्वेश्चंस डिस्कस हो सके, ठीक है? दैट आई विल टेक केयर, डोंट वरी। नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा स्लो भी चल रहा है ये। आई एम ट्राइंग टू कम आउट विद द टाइम टेबल ऑल्सो, टॉपिक वाइज, वो भी मैं कर ही रही हूँ। वंस दैट इज डन, देन ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्वेश्चंस का, एंड ये सब, ये हम लोग वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, यस, यस दैट्स ट्रू। जितने क्वेश्चंस करेंगे, द मोर यू सॉल्व द क्वेश्चंस, द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। विल डू दैट, डोंट वरी। और वो भी क्लास में ही डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस पीडीएफ एज वेल, सो दैट आप बाद में भी इनको क्वेश्चंस को रिवाइज कर सके, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चंस बना ही रही हूँ टॉपिक वाइज, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो डन, शैल वी वाइंड अप?
तो दो सजेशंस मिले हैं आज मुझे. 1, more number of pictures, I'll try my best. दूसरा है more number of questions, वो तो for sure वो हो जाएगा. उसमें कोई डाउट नहीं है from next class. ठीक है, मैं आज एक बार चेक करके जो कॉमन वाला है वो सब देख के अकॉर्डिंगली विल टेक टुमारोज क्लास. अभी तक मेरे माइंड में अभी कुछ नहीं है कौन सा टॉपिक लूंगी नेक्स्ट सेशन में, तो कल के लिए वो सरप्राइज रहेगा. आज अभी थोड़ी देर में बैठ के आई विल सी विच टॉपिक कैन वी टेक अप. So accordingly we'll take the next class tomorrow. Okay then, shall I wind up? So see you all then in the next class. Thanks a lot. Thank you very much. You have been great audience. Thank you. See you all tomorrow then. Take care. Bye bye. Good night.